We are supposed to start with the sums. The question says Nadi Limited exports on 15th December 2012 goods worth $1 lakh to Orient Traders in New York. So export किया मतलब sale किया. So sales account will be credited. Who is the customer? Orient Traders. Orient Traders account will be debited. Payment was received on 20th Feb. On the date of export. On the date of export, matlab on the date of transaction, called as the transaction rate was $1 equal to 45, and when the dollars were actually received, the exchange rate was $1 equals to 48. So there are two transactions. One is for exporting the goods out of India, it is sale, and second transaction is for receiving the money. But since it is export, both the transactions are in foreign currency, and the question arises, how shall I record them in my books of accounts? Let's see. Here I'll write down date, particulars, ledger folio, debit rupees and credit rupees. We exported on 15th December. Put your pens down. You're not supposed to do anything right now. I said put your pens down. 15th December 2012. मेरा पहला एंट्री आएगा. Be quiet. First entry will be for sale. So sales account will be credited. Sales account will be credited. And who is the receiver? Debit the receiver. So Orient Traders account debit. What is the value of sale? Sir, $1 lakh. But I will basically use $1 lakh multiplied by. What is the rate on 15 December? 45. Multiply 45. This will become 45 lakhs. Any doubts? Narration. Been goods exported. There have been goods worth $1 lakh exported to Orient Traders. That's it. First transaction is done. Now, when was the money received? 20th Feb. $2013. ऐसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट. Basically, याद रखो, money comes, bank account will be debited. Money goes out, bank account will be credited. Logic: debit the receiver, credit the giver. So bank account debit. How much money is received? $1 lakh. At what rate? 48. So this comes to how much? 48 lakhs. 2. Who is the giver? Who gave the money? So Orient Trader account will be credited. Narration. Been $1 lakh received at the rate of rupees 48. Any queries? All clear? My next question is, जो हमने सेल किया था, जो हमने एक्सपोर्ट किया था, क्या रेट था?
ऐसा मिला तब क्या रेट है? 3 रुपए ज्यादा मिला कम मिला? ज्यादा मिला तो फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है तो क्या करने का? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट करने का। क्या करने का? I won't transfer directly to P&L account. We create a new account on the date of transaction itself, and I will credit the foreign exchange. Be careful now. Foreign exchange fluctuation account will be credited. Golden rule of nominal account. Credit the gains, debit the expenses. So gain हुआ तो we simply we don't transfer it directly to P&L account. We create an account called as foreign exchange fluctuation account. And at the end of the year, whatever profit or loss happens because of the foreign exchange fluctuation is transferred to P&L account. So which account I will debit now? Which account I will debit? P&L? नहीं, P&L account debit नहीं होगा. आपका पार्टी कौन था? Orient Traders. उनका account debit होगा. Because if you look clearly, in the first entry we have debited Orient Traders by 45 lakhs. In the second entry we have credited Orient Traders by 48 lakhs, and the account has been settled. पूरा पैसा आ गया ना $1,00,000, लेकिन अकाउंट टैली नहीं होगा आपका. पैसा पूरा आ गया, अकाउंट टैली होगा क्या? सर डेबिट साइड में ओरिएंट ट्रेडर्स में 45 लाख आएगा, फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट. और क्रेडिट साइड में 48 लाख आएगा, सेकंड एंट्री का इफेक्ट. Even though the whole money has been received, even though the account has been settled, the account won't tally, and that's why I need to debit the party account here. Orient Traders account will be debited. Narration: been profit on exchange rate fluctuation recorded या entered. What is the amount? 3 lakhs. What is the amount? 3 lakhs. Any questions? How do I got 3 lakhs? सर $1,00,000 मिला अपने को और एक्सचेंज रेट डिफरेंस कितना था? 3 रुपए का. Any queries? Clear है? Screen is clear. All of you are able to watch it clearly from there. Last bench, last benches, boys, girls, all clear. My humble request: don't come on the first bench, but you can see from the second, third, fourth, and fifth benches henceforth, because I can't zoom it out so much every time. छोटा सा मैं zoom कर सकता, बड़ा सा मैं नहीं कर सकता. Is it clear to all? Any questions? Shoot now, first. हेडिंग देना इन द जर्नल ऑफ, क्या नाम है इसका? नारी लिमिटेड. ऊपर आपका हेडिंग आएगा इन द जर्नल ऑफ, वी आर पासिंग देम इन द बुक्स ऑफ नारी लिमिटेड. There's a doubt among the students regarding the third entry. See, once you buy the goods or you sell the goods, either you are going to pay the money or you are going to receive the money. The second entry, I received the money $1 lakh at rupees 48, and this money was received for an export done on 15th December. And the goods were exported, the rate was 45. When the money was received, the rate was 48. Technically, I received, for each dollar, I received 3 rupees more. So for $1 lakh that I have received on 20th Feb,
I have received $1 lakh multiplied by 3. 3 लाख रुपए ज्यादा मिला, पैसा ज्यादा मिला तो फायदा है सर। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस होता तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट होता। एंड हु पेड द मनी? Because of that, because they paid, I received 3 rupees more. So concerned party account will be debited or credited. And at the end of the year, on 31st of March, we make the foreign exchange fluctuation account, and whatever balance comes in the foreign exchange fluctuation account, it is transferred to P&L. Clear? Come to sum number 3 now. I assume all are done with the second one. Yes, sum number 3. Sum number 3. DPC imported goods worth $40,000 from Enron Corporation on 10th August 2012. 10th August 2012 को import किया. Import is purchase when the exchange rate was $1 equals to 42.9. चलो पहले इतना कर लेते सर. What's the date? 10th August 2012. My entry will be, because I am buying the goods, purchase account shall be debited because I am importing the goods, I am buying the goods. 2. Who is the supplier? Enron Corporation account will be credited. How much will be the amount? What is the quantity we have imported? Sir, $40,000 multiplied by 42.90. That comes to how much? कितना आ रहा है? Pardon? 17,16,000, right? Others can correct me if I'm wrong. Narration. Been goods imported worth $40,000 at the rate of rupees. डाउट है? इनको बात करने में सीधा बाहर जाओ, बात करके आओ. Otherwise, I will move out of the class, and I'll assume that this topic is done from my side. You complain whomsoever you want to complain. Rules are very clear. Once I start speaking, you are supposed to shut your mouth. That is the only rule I follow in my lecture. Next, पेमेंट कब किया आपने? सर हमने फर्स्ट पेमेंट किया, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है. DPC agreed to pay Enron in 2 equal installments on 10th September and 10th October. Exchange rate on settlement dates were as follows. So 10th August is the transaction day. 10th August का जो रेट है वो ट्रांजैक्शन रेट है. इसका जब पेमेंट किया, 2 बार पेमेंट किया सर, $20,000. ये कहां से आया सर अमाउंट? $20,000 अमाउंट कहां से आया? क्लियरली वर्ड यूज किया क्वेश्चन में. 2 equal installments. We are imported goods worth $40,000 divided by 2. $20,000 का एक इंस्टॉलमेंट. $20,000 का एक इंस्टॉलमेंट. क्लियर? क्या करना है? कैसे पेमेंट करें? पहला पेमेंट कब होगा? 10 सितंबर. पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा?
credit. And who is the receiver? Enron Corporation account is the receiver. How much money? $20,000. What is the rate? What is the rate? 10 September का rate क्या है? 42.75. Check in the question here. That is the rate. Out है? कितना आ रहा है? Amount बोलो. 8,55,000. 8,55,000. Narration. Being paid $20,000 at the rate of rupees 42.75. I'm adding anything in capital. You are not supposed to add everything in capital here. Tell me one thing. When we imported, rate क्या था? 42.90. अभी क्या रेट है सर? पेमेंट कम रेट से होगा, ज्यादा रेट से होगा? पेमेंट कम रेट से होगा तो फायदा है क्या नुकसान है? कितना फायदा हुआ सर? 15 पैसे का फायदा. 42.90 minus 42.75. How much is the benefit? 15 पैसा per dollar. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कितना करूं? 40,000 करूं? By 20,000 because we have paid only. अच्छा, फायदा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा सर? Foreign exchange fluctuation account credit. I won't type it every now and then. FEF account. FEF is foreign exchange fluctuation account. And which account will be debited? Which account will be debited? So payment किस हो गया? So Enron Corporation account will be credited. Narration being paid. Sorry, being profit था ना? Being profit on foreign exchange fluctuation recorded. Bear me for the spelling errors. What is the amount, बच्चा लोग? What is the amount? What is the amount? Sir, $20,000 multiplied by 0.75 था, कितना था? 0.75 था ना? 0.15. That comes to how much? 3,000. Any doubts? Any doubts? अच्छा, सेकेंड पेमेंट कब किया आपने? 10th अक्टूबर को. क्या रेट था? 43.5. अक्टूबर सेकेंड पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. एंड हु इज द रिसीवर? Enron Corporation account is the receiver. How many dollars? $20,000 multiplied by how much is the rate? 43 point. 43.75, right? 43.50. How much is the amount in rupees? 8,70,000. 8,70,000 is the amount, right? Addition. Being paid $20,000 at the rate of rupees 43.50. Tell me, जब हमने इंपोर्ट किया तब क्या रेट था? जब हमने इंपोर्ट किया तब क्या रेट था बच्चा लोग? 42.90. जब हमने पेमेंट किया तब क्या रेट है? 43.50. We are paying more or we are paying less? How much more? 0.60, 60 पैसा. फायदा क्या नुकसान है? नुकसान है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? Foreign exchange fluctuation account will be debited and पार्टी का नाम क्या था? Enron Corporation account will be credited in loss on foreign exchange fluctuation
recorded. What is the amount? What is the amount? $20,000 multiplied by how much? 0.60. That comes to how much? और एक एंट्री सर और एक एंट्री आएगा, और एक एंट्री आएगा, कौन सा सर? ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट जो है ना, यस यहाँ पे प्लीज रुकिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है ना, इसका बैलेंस निकालो, उसका अकाउंट बनाओ, लेजर अकाउंट। अब चेक करना, हमने दो जगह पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट यूज किया है। तो एंट्री नंबर 3 में आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट हुआ 3000, कितना क्रेडिट हुआ? और लास्ट वाले एंट्री में डेबिट हुआ कितना? डेबिट हुआ मतलब उतना नुकसान है 12,000 का, माइनस फायदा कितने का हुआ था? 3000 का। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 9000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? पक्का पक्का? लॉस हुआ? लॉस हुआ। क्या करने का? लॉस कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट। लास्ट एंट्री, लिसन टू द लास्ट एंट्री नाउ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 12 माइनस 3। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा सर? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिस इज कॉल्ड, लिसन 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 सर, अब तक आप लॉस क्या कर रहे थे सर? लॉस हुआ तो एफपीएफ अकाउंट डेबिट करना है, लॉस हुआ तो एफपीएफ अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। प्रॉफिट हुआ तो एफपीएफ अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। सर यहाँ पे तो आप उल्टा कर रहे हो। 9000 का लॉस हुआ, आपने एफपीएफ अकाउंट यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया। क्यों? बिकॉज दिस इज द ट्रांसफर एंट्री। तो क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बच्चा लोग? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर जो क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। तो डेबिट है उसको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। और कहां पर ट्रांसफर करते हैं उसको? पीएनएल में। तो पीएनएल विल बी डेबिटेड एंड एफपीएफ अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नरेशन 3 नेट लॉस transferred to profit and loss account. Date will be same. No, date will be 31st March 2013। ईयर एंड का डेट आएगा, डेट आएगा आपका, ईयर एंड का डेट आएगा। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? ऑल ऑफ यू क्लियर है? पक्का? This was sum number, this was sum number 3, right? So shoot past, all of you, read past.
All done. Done, all of you? I assume all are done. Come to sum number 4. Sum number 4. On 1st Jan 2013, Sonali Limited imported $1 lakh worth of goods from Robin Traders of USA. So what was the rate on 1st Jan? 46 rupees. 1st Jan 2013, my first entry, purchase account debit. People might argue, can I debit import account? Yes, you can import, you can debit import account, but I will still prefer to write purchase account. 2. Who is the giver? Robin Traders. Narration, being imported goods worth $1 lakh at the rate of rupees 46. So this will be 46 lakhs, right?
Now the payment for the same was made on 15th April. The payment for the import was made on 15th April. But भाई और बहनों 15th April के पहले क्या आता है? 31st March. Books of account 31st March को क्या हो जाएगा? Close होगा. Tell me what is the date on 31st of March? हम कहेंगे जब हमने import किया था, listen carefully. We are not making the payment on 31st of March. Those were there on the day one lecture. They must have recalled one doubt asked by one of the students. कि अगर दोनों पेमेंट और ट्रांजैक्शन और उसका पेमेंट या रिसिप्ट क्लोजिंग डेट के पहले होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब तक वही होता था हमारे सम्स में. ये सम में हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 1 Jan को, उसका पेमेंट कब हो रहा है? 15th April को, और बीच में आ जाता है तुम्हारा क्लोजिंग डेट. व्हाट्स द क्लोजिंग डेट? 31st March. हम कहेंगे जब इंपोर्ट किया तब क्या रेट था? 46. और हम लोग वैल्यूएशन करेंगे 31st March को क्लोजिंग डेट पे, क्या रेट से? 45 से. तो 1 रुपया कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा? कम पे करना पड़ेगा. फायदा है क्या नुकसान है? तो 31st March डेट ध्यान दो. 31st March को एंट्री आएगा. फायदा है तो सर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. और कौन सा पार्टी है? रॉबिन ट्रेडर्स. रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट. P&L अकाउंट नहीं लिखना गलती से भी. नरेशन बीन. दिस इज नॉट प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, प्रॉफिट ऑन पेमेंट. दिस इज प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन ऑन क्लोजिंग डेट. How much will be the profit? बच्चा लोग सर $1 लाख बाकी था, मल्टीप्लाइड बाय कितना डिफरेंस है? 1 रुपीज का. मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा? 1 रुपीज. तो दैट विल बी 1 लाख. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? अब सुनो 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 सुनो, बाद में लिखो यार. I'll give you ample time to write. I'll give you ample time to write. अब मैं बोल रहा हूं कि सर अभी 31st March के बाद ये डॉलर इनको क्या रेट से लेना चाहिए? 46 की 45. अभी 31st March हो गया, वैल्यूएशन कर दिया. एज पर अवर बैलेंस शीट, एज पर अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी आर सपोज टू रिसीव दिस एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ ₹45. बिकॉज इनका वैल्यूएशन 45 से हुआ है. अभी वो जो ट्रांजैक्शन डेट का जो रेट है ना 46, अभी वो अपने कुछ काम का. अब इसका पेमेंट करेंगे अपन 15 अप्रैल को. 15th April आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट. तो पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. हु इज द पार्टी? रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट. एडिशन 1 लाख paid at the rate of ₹48. तो सर ये मेरे $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 48 रुपीज. यहाँ पर आएगा 48 लाख. यहाँ पर भी आएगा 48 लाख. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेम डेट हम कहेंगे हमको रॉबिन ट्रेडर्स को पैसा देना था. क्या रेट से देने का था सर? 46 की 45. 45 क्या रेट से हमने पेमेंट किया? इन पर ज्यादा पे किया, कम पे किया? ज्यादा पे किया तो फायदा है क्या नुकसान है? नुकसान है. तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. सर $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना? 3 रुपीज. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? अजय एनी डाउट्स इंग्लिश में पूछता है मैं. नो क्वेरीज ऑल ऑफ यू. 2 कौन सा अकाउंट आएगा? हु इज द पार्टी? रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट. अजय उसके पहले कंटिन्यू और करने का था अपने को. चलो करते बाद में. इसका नारेशन क्या लिखूं? इन लॉस ड्यू टू फॉरेन
exchange fluctuation recorded या entered. Let me complete one more thing. So 31st March को साल खत्म होगा. Just let me complete this, please. Look here, look here, look here. 3 बार बोला. बच्चा लोग यहाँ पे और एक एंट्री आएगा अपना. 31st March is the closing date. On that day, I will close my foreign exchange fluctuation account. बच्चा लोग इसके ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस देखो. तुम्हारे पास कितना अकाउंट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट? एक ही जगह पे दिख रहा है. तो प्रॉफिट है का लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट में क्या होगा? प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट में क्या होगा बच्चा लोग? क्रेडिट होगा. और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्यों सर? डेबिट एंट्री है, अपना ट्रांसफर एंट्री है. ये कौन सा एंट्री है? एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? We transfer the balance in the foreign exchange fluctuation account to P&L account. तो in my case 31st मार्च के पहले से दो ही ट्रांजैक्शन था, उसमें से एक ही ट्रांजैक्शन में हमने यूज किया है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. कितना क्रेडिट किया है सर? 1 लाख. तो क्रेडिट किया है 1 लाख, वो प्रॉफिट है, उसको ट्रांसफर करना तो P&L अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट. और एफपीएफ अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट. अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख. एडिशन in profit on foreign exchange fluctuation. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. Any doubts? Any questions? This is one entry that people just forget. They lose the marks in the exam. Be very careful. ये ईयर एंड को ही होगा 31st मार्च को. Should pass all of you.